Anji, good morning everyone. Today 10th of June 2021, going to proceed with the further explanation for the chapter drainage, chapter 3rd from geography, and today we will be going to discuss the map content, what we will have to do from this chapter. And इस chapter में सबसे पहले हमने जो rivers करनी है that are Himalayan rivers. Himalayan rivers में first कौन सी river है देख लीजिए. Himalayan rivers. Yesterday we have discussed about two rivers. One is the Indus and second is the Ganga. And third we have to do that is the Brahmaputra. ठीक है? Actually, these are the three basins also we have to do. Fourth river only on the map, but we are not going to do in detail with the content part. That is Satluj. यहाँ लिखने लगी हूँ. Only for map. Addition है ये. Got it? Only for map. This is the addition which we have to do. So next हमारी जो आती है peninsular. Peninsular rivers में आपने करनी है the Narmada. Then the Tapi. Then Kaveri. The Krishna. All six rivers, either two are from the western side and four are to the eastern side flow. Flow of these rivers, west side and east side. Fine. You have to do these rivers. Then lakes हमने करनी है, which is still pending. Lake हमने कौन-कौन सी करनी है? That is Wular Lake. Wular Lake, do you know where it is? Wular Lake, it is in Jammu and Kashmir, Indus के नीचे. Fine. Then Pulkat. Ma'am, the board is not visible. Just wait, beta. Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, sir. Sambar. And then Chilka. Chilka Lake we have already done. Chilka Lake is in Odisha. So all these points we have to do from the map work from this chapter. Addition is we are reading all the content related to Indus, Ganga and Brahmaputra from our book. Only the Satluj part we are not having in our book, but we have to mark it on our map. And ये map के लिए add है. Second आ जाती है peninsular rivers. All we have to do the Narmada, Tapi, which originate from Vindhyas and Satpura and move toward the western side. Then eastern side, जो western ghats में सारी originate होती हैं, the Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanadi. I had already given you the sequence MGKK, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. So lakes we have to go with the four lakes: Wular Lake, Pulkit Lake, Sambar Lake and Chilka Lake. If you want to go for the identification of these lakes, come to page number 19 and mark over there. Page number 19, mark over there, Wular Lake. It is in the Jammu Kashmir
south side of Indus River. Then second lake is Sambar Lake. It is west side of Aravali Hills. आपको अरावलीज पता है? Where it is? It is in the Rajasthan, stretch from Gujarat to Delhi. So Aravali Hills के वेस्ट साइड पर जहां एरिड एरिया स्टार्ट होता है वहां पर सांबर लेक है. यू कैन मार्क ओवर देयर सांबर लेक. देन थर्ड आ जाती है आपकी पुलकित लेक. पुलकित लेक इज इन द ईस्टर्न साइड एंड इट इज आफ्टर द कृष्णा रिवर एंड बिफोर द कावेरी रिवर. पुलकित लेक, it is toward the eastern side. अगर हम लोग ईस्टर्न साइड का मैं मैप डिपिक्ट करवाऊं, यहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और यहाँ पर आपकी आ जाती है पुलकित लेक. गॉट इट? ठीक है. देन आ जाती है आपकी चिल्का. इट इज साउथ ऑफ महानदी. चिल्का लेक south of Mahanadi falls in Odisha, which we have already done in the previous chapter. Any doubt to anyone, please beta ask. If anyone is having any doubt, beta. If map is visible, look at this. First lake is Wular Lake. It is over here. You can see. यहाँ से हमारी इंडस्ट्री पर जाती है तो यहाँ पर हमारा वुलर लेक आ गया नंबर 1. यहाँ पर हमारा सांबर लेक आ गया नंबर 2. यहाँ पर हमारा जो है आ गया पुलकित लेक और यहाँ पर आ गया हमारा चिल्का. गॉट इट? Yes, ma'am. Is it okay? Yes, ma'am. Everyone, it is clear? So if we have to go with the rivers, that is Indus River, then this will be the Brahmaputra River, which is joining through the Arunachal Pradesh by taking a bend from the George and falling to West Bengal, where it is called Jamuna, and covering 910 kilometers of area in India. ठीक है. अब मैं अगली रिवर जो है वो करवाने लगी हूँ. दैट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर. आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर. As yesterday we had discussed Indus River and Ganga River. 2 rivers we have already discussed. Now third river, that is Brahmaputra River. Come to page number 20 from your book. अपने बुक के 20 पेज नंबर पे आ जाइए. Brahmaputra rises in the Tibet east of मानसरोवर. ईस्ट ऑफ मानसरोवर. वेस्ट ऑफ मानसरोवर से इंडस निकलती है. ईस्ट ऑफ मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र निकलती है. एंड ब्रह्मपुत्र नेम्स इन द तिब्बत इज द सांगपो. इट इज लिटिल लार्जर देन इंडस रिवर. इंडस रिवर की जो किलोमीटर जो है इंडस रिवर वो कितनी है मैंने कल बताई थी. इंडस रिवर कितनी है? 2900. 2900. कितनी है? दैट इज 2900 किलोमीटर. एंड ब्रह्मपुत्र कितनी है? 2910. दैट इज 2910 किलोमीटर. लिटिल लार्जर. फाइन. एंड गंगा कितनी है? गंगा इज 2525. 252. Got it? Yes, ma'am. ठीक है. So तिब्बत रिवर जो है it is originated Tibet east of मानसरोवर lake, very close to the source of Indus and Satluj. यहीं से इंडस निकलती है, यहीं से सतलुज निकलती. ठीक है. And then it is slightly longer than Indus and most of its course lies outside India. ये ज्यादा भारत से बाहर ही बहती है in the form of the Sangpo, in the form of Jamuna.
इंडिया में सिर्फ 910 किलोमीटर एरिया जो है वो कवर करती है. So on the searching of Namcha Barwa, it takes U-turn. Namcha Barwa यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से टर्न लेती है थ्रू द जॉर्ज. जॉर्ज का मतलब होता है a narrow rocky channel through which the river is turning to the different side in a very beautiful way or with the full speed. That is George. So George के through learn मतलब enter करती है U-shaped and enter in Arunachal Pradesh through a George. George means a turning point. माउंटेन मतलब पूरे माउंटेन्स के साथ कवर होता है और पूरा का पूरा बेंड लेकर वो अंदर को कवर करती है. एंड इट इज कॉल्ड दिहांग. इट इज ज्वाइंड बाय दिबांग. ये यहाँ से दिहांग से एंटर करके यहाँ पर बनाती है. और ये जो रिवर है इट इज फॉर्मिंग वेरी डिफरेंट चैनल्स. ये रिवर जो है क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स है, पूर्वांचल एरिया है, ये हमें पता है यहाँ पर पूर्वांचल है, माउंटेन्स है, तो ये रिवर जो है एक फ्लो में नहीं है. ये रिवर जो है इन दिस टाइप ऑफ फ्लोज डिफरेंट डायरेक्शंस फ्लो है. उस डायरेक्शंस को हम करते हैं ब्रेडेड चैनल. ब्रेडेड चैनल BRAIDED ब्रेडेड चैनल्स के थ्रू रिवर जो है एक ऐसा वेब की तरह जाती है. ठीक है, वेब की तरह जाती है. एंड द हाईलैंड और वर्ल्ड का इन लैंड के अंदर आइलैंड जो है, इंडिया का लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर ही बनाती है. एज इट इज मेजोली. मेजोली आइलैंड इज बीइंग मेड थ्रू द रिवर ब्रह्मपुत्र इन इंडिया. एंड इट वाज मतलब कंसिडर्ड टू बी एज अ मेजोली को नाम कब दिया गया? दैट वाज गिवन इन 2016. Majoli as a river island formed by Brahmaputra river in Assam. क्योंकि इस एरिया में मैक्सिमम रेनफॉल होती है because of the mountain area, because of the monsoons, because of the high altitude area. Rain receives high and the water content through the George when it enters through this area, it is at high speed and spread into the, we can say, braided form. ब्रेडेड फॉर्म में हाई स्पीड पर होने के कारण यहाँ पर सारा सिल्ट और डिपॉजिट्स जो है वो फॉर्मेशन होते होते और एलिवेटेड हाई होता जाता है, जिस कारण यहाँ पर हर साल फ्लड्स आते. लोअर एरिया ऑफ दीज साइड आर ऑलवेज रिसीविंग फ्लड्स इन दैट एरिया. और मेजोली आइलैंड इज बीइंग फॉर्म्ड, रिवराइन आइलैंड in India, that was given a name in 2016. 2016 में ही उसको नाम दिया गया, आज से 5-6 साल पहले. Is it okay? So every year during the rainy season, हर साल rainy season में river flow out of its bank, यहाँ पर पानी ज्यादा स्पीड से आता है, प्लस ऊपर से बारिश हो गई, ऊपर से माउंटेन का जितना पानी है वो भी रिवर के अंदर ही आना है. So that caused Assam, Bangladesh, all the northern states receiving high amount of floods, and Brahmaputra marked as a huge deposits of silt and a bed coursing, a river bed always rising up because of the silt and cause you can say frequently cause floods. And it is also when it goes to the Bangladesh, it is called Padma and made the Sundarban Delta, which is world largest delta. Any doubt to anyone up to this? Please, beta. मैम कहते हैं लेक्स को डिस्कस कर लेते हैं. Bulla Lake is in which state? Anyone? in Jammu and Kashmir. Okay, very good. Only one child is studying, I think. Shaurya, Sambar Lake, it is in Rajasthan. Chilka Lake, it is in Odisha. And Pulkit Lake, it is in, बताइए, Andhra Pradesh. Is it okay? Is it okay? So rivers, we have to go with the rivers. That is Indus River, originated from the west side of Mansarovar
After that, south side of Mansarovar, Satluj Lake is being originated, and eastern side of Mansarovar, Brahmaputra River is being originated from that glaciers. Brahmaputra is known as the Sangpo in Tibet, and in India, when it is entering from the Dihang Valley through the beautiful George, it covers only 910 kilometers an area in India, and turning with the braided channels, and frame a high, a riverine island, that is Majoli in Assam. After that, when it enters in Bangladesh, its name is Jamuna, and it contain all the silts and deposits which make rise on the land surface, cause widespread, you can say, floods every year in Indian northern eastern states because of the heavy rainfall received from in that side. Due to that reason, floods are always there. And next point aa jata hai ki this river is forming Sundarban Delta, that is world largest delta, along with when it meets with India's river Ganga in that side, which is known as Padma. इंडिया की जो गंगा रिवर है वो भारत में गंगा कहलाती है, जब वो बांग्लादेश में जाती है तो इट इज नोन एज पद्मा. राइट डाउन दिस नेम आल्सो, like Ganga river when moves within Ganga India, it is known as Ganga. When it enters through Bangladesh, it is known as Padma. Is it okay? Jamuna, Bangladesh, Brahmaputra rivers, and Padma, India's Ganga river. Is this point is clear to everyone? Any doubt Yes, to anyone, beta? So what do you mean by Indus Water Treaty? Indus Water Treaty was being taken in 1960 with India and Pakistan to make or give only having the Indian government got the permission to use 20% of the river Indus water to provide irrigation to Punjab, Haryana, and western part of Rajasthan. Rest of the water will go to Pakistan side. Is it okay? Any doubt, bache?